सर एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। एलपीजी और एलईडी, लैंड सी, व्हाई शुड वी कीप इंजन डिपार्टमेंट एज ऑन द टॉप लेवल? Hello दोस्तों, this is Dev Chitransh from the Maritime Mate and we are back with the another part of Arun Rathee's sir's interview, जिसमें जो हम लोगों ने राठी सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करी हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो और ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे सर के सामने, उनसे बातें करेंगे, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे डिटेल में और उनके सारे पर्सपेक्टिव भी जो है हम लोग देखेंगे कि हर क्वेश्चन को वो कैसे जो है कामली तरीके से जो है हैंडल आउट करते हैं एंड हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से जवाब भी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अरुण राठी सर को फॉलो करना है तो नीचे उनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने दे दिया, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं उनको। और यस, मैरिटाइम मेट और मेरी पर्सनल आईडी का भी जो इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं दिल खोल करके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। Whenever sir we are talking about the chief engineers or whenever we are talking about the engine department sir, how much it came to the question that why it is so much important that being in the engine department you should keep each and every aspect on the top notch. But why should we keep engine department as on the top level sir? Or we should keep engine department on the top level or the tech department sir, according to you? Okay, one, there is nobody on the top. We are all equals out at sea. Okay, even though the command is always with the master, because you cannot have two commanders. एक तलवार में एक मैन में दो तलवारें नहीं हो सकती. Exactly. So the command is always with the master, but every single member of the team is important. Now the importance of engine room comes from the fact that everything required for your survival out at sea comes from the engine room. The water you are drinking comes from the engine room. The AC system, the air circulation comes from the engine room. The power, the navigation, the propulsion, everything is coming from the engine room. So that small compartment on the entire ship is like the heart of the ship. Okay, if in many cases, like in 2006, there was an incident on an MOL ship where engine room caught fire. So they lost control of the entire ship. If you lose the engine room, you will end up losing the ship. But at the same time, there are a lot of chief engineers who make this mistake. They give engine room priority above the vessel. Okay, if the vessel goes down, you cannot save the engine room separately. The engine room is going to go down with the vessel itself. So if the survival of the vessel is at question, you have to sacrifice your engines, you have to sacrifice your machinery. There is no question about it. Because the machinery is not going to survive without the ship. Okay, if the ship goes down, the engine, the generator, everything is going to go down with the ship. So again, the priority, we have to prioritize things accordingly, and most importantly, survival of humans or survival of the crew is the most important thing out there at sea. Wow sir, मतलब the interview is so मतलब एकदम से आपके करियर की तरह से इतना फैसिनेटिंग है ना। मतलब गाइस, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मजाक बताता हूँ। राठी सर ने एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, ना जाने कितनी कंपनी में काम किया। कुछ कंपनी के नाम मैं आपको बताता हूँ। MOL हो गया, गुडवुड हो गया, ESM हो गया, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, BSM हो गया, एंड देन साइन ऑफ सर ने किया था सिनर्जी जैसी कंपनी से। तो यहाँ पे कंपनी का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ये है कि सर ने एक्सपोजर कितना दिया अपने पूरे एंटायर करियर में एज अ चीफ इंजीनियर। ऑन दिस बेसिस ओनली सर एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। आई विल जस्ट पुट अ क्वेश्चन एंड आपको सर वन वर्ड में आपको आंसर देना है सर। ओके, एलपीजी और एलईडी? एलईडी। लैंड और सी? सी। आल्सो ऑन शोर? ऑन शोर। वैसे क्वेश्चन आपसे फिर से पूछने वाला, थोड़ी देर में घुमा करके सर। इसके अलावा स्टार्टिंग ऑफ द डेज ऑफ योर करियर और द एंडिंग डेज ऑफ योर करियर, बेस्ट मोमेंट? एंडिंग डेज सुकून मिलता है। There is a saying, जिंदगी पूरी बीती तो जीने का दिन आया। Oh वाह सर, वाह, that's great sir. So आपने गैस रिव्यू में काम किया, आपने बल्क रिव्यू में काम किया, तो गैस और बल्क? Gas, definitely gas. Definitely gas. Money factor? No, not exactly money. It is job satisfaction. Job satisfaction sir. Sir, there is one more point sir. Many officers must be watching this video sir, and for them also I am just making our upcoming officers that are seeing this video. Sir, what do you mean by exactly the definition of job satisfaction? क्योंकि सर कई लोग होते हैं कहते हैं सर, there are many people जो कहते हैं कि यार मुझे स्क्रीन को जॉइन करना है, मैं टैंकर को जॉइन कर लूँगा, जिंदगी तो मौज ही मौज है।
लेकिन सब उनको पता चलता है कि नहीं यार क्रूज भी मुझे क्रूज भी करना है, क्रूज में जाते हैं, फिर क्रूज से फिर वापस आते हैं कंटेनर में, कहते हैं भाई क्रूज में वो जिंदगी नहीं है, फिर से कंटेनर से फिर वो बल्क में भागते हैं. तो सर द स्विचिंग, द जंपिंग, इट इज गुड बट इज बैड और अ पर्सन शुड डू और नॉट. Okay, one regarding switching, always remember that nobody likes a person who changes company every single contract. Okay, if you have joined a company, you should give them at least 3 or 4 contracts. Do not leave a company without spending at least 3 contracts with them, because it may be that that particular shift was bad, or maybe there was some other different circumstances. So you cannot judge a book by the cover. Same way, you cannot judge a company just by doing one contract with them. Okay, you may have different goals in life, they may have different expectations from you. So before changing, always remember at least do 3 contracts or 4 contracts with each company. Now, regarding job satisfaction. Okay, the idea of job satisfaction is when you feel that the money that you are taking with you is actually justified. Okay, and one thing. Second thing is when you work with juniors who respect you with their heart. Means, let us say engine room में कुछ problem हुआ है, there is some problem, the engine is not starting, and you arrive at the scene, and there are people who will simply start shouting and saying that okay, you cannot start the engine, why chief engineer has to come down to start the engine. Then there is a second person who listens to the junior what the problem was exactly, and then gives them a solution. And after the entire drama is over, and then they calls up their junior and they tell them that what exactly was his mistake, how this situation could have been prevented, and if the situation would have escalated, what could have been the consequences. So if you go by this approach, you will see that your juniors will actually respect you. Okay, so that particular respect in the eyes of your juniors, trust me, that is the biggest satisfaction that you can get. उससे बड़ा कुछ नहीं. ओहो, काफ़ी मज़ा आ गया ना. मतलब रैपिड फायर में तो बहुत मज़ा आया. मेरा तो फेवरेट पार्ट जो रैपिड फायर था. आपके हिसाब से आप बताइए, आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा. मैं पार्ट 1 की वीडियो के एंडिंग में आपसे पूछना भूल गया. आज की इस वीडियो के एंडिंग में पूछता हूँ, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी साइड से कौन सा रहा? और सर कोई एक क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं. सर जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे. इसी के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं. इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा. मैं बहुत जल्द लौटूंगा और नए ढेर सारे पॉडकास्ट, पार्ट्स एंड बहुत ढेर सारी चीज़ों के साथ लेटेस्ट कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा. एंड नोटिफिकेशन बेल को फिर मैं बोल रहा हूँ हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना. इसलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय.